हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है बहुत ही स्पेशल वीडियो जो कि है मैं आपको कराने वाली हूँ अपना हाउस टूर। माय हाउस इज इन डबलिन आयरलैंड एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक छोटा सा टीनी टाइनी घर आपको दिखाऊं। इसकी डिटेल्स मैं आपको एंड में दूंगी, लेकिन लेट्स चेक द हाउस फर्स्ट। अपार्टमेंट है। इसका जो फ्लोर साइज है कंपैरेटिवली जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट होते हैं उनके जितना है ऑलमोस्ट, जबकि हालांकि ये सिर्फ 1 बेडरूम का है। इसका फ्लोर साइज अराउंड 50 या 52 मीटर स्क्वायर कुछ इतना है, जहां तक मेरे को याद है। तो गाइस ये है बेडरूम। सबसे पहले हमने जब इसको लिया तो हमने सबसे पहले इसका पेंट करवाया था चेंज, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल जैसा पेंट हो रखा था। यहाँ पे येलो येलो कलर का हमने पूरा चेंज करा के इसको थोड़ा सा मैचिंग, मतलब जैसा कलर मुझे पसंद है वैसा करवाया। उसके बाद फिर हम लोग बेड लिया इन द ऑलमोस्ट सेम कलर, और फिर हमने ये लाइट ली। इससे पहले हमने एक और लाइट ली थी आइकिया से, वो हमें पसंद नहीं आई बाद में, इट वाज टू डार्क, बट देन वी चेंज इट टू अ नॉर्मल शेड। इस रूम में ज्यादा कुछ नहीं है यार, बस ये एक अलमीरा है। यहाँ पे अगर आप अपार्टमेंट खरीदते हो ना तो उसके अंदर अलमीराज इनबिल्ट होती हैं, आपको खुद से नहीं बनवानी पड़ती। तो ये हमें अपार्टमेंट के साथ ही मिली थी। तो बस यहाँ पे यार मैंने एक छोटी सी शेल्फ लगाई जब मैं यहाँ आई थी, बस छोटी सी कुछ रखने के लिए। और ये है मेरा एक छोटू सा टेबल। अभी मैंने इसको साफ कर रखा है एकदम, ताकि वीडियो के लिए, वरना तो मैंने बहुत कचरा मचा रखा है शेल्फ में। बट और यार ये है रूम से व्यू। अंधेरा हो रखा है अभी क्योंकि हम शूटिंग अ वेरी अर्ली मॉर्निंग वीडियो। अभी हम उठ गए थे सुबह तो थॉट कि चलो वीडियो शूट कर लेते हैं। बट इस घर में ना स्टोरेज की कभी कोई हमें प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि एम्पल स्टोरेज देखा है उन्होंने। तो ये है सबसे पहला एक छोटा सा हमारा स्टोर रूम। नॉट छोटा यार, मतलब 1 बेडरूम के हिसाब से काफी साइजेबल है। यहाँ पे सब हमारा सामान पड़ रखा है, हमारी जितनी भी यूटिलिटीज, मतलब जो हम यूज करते हैं, अप्लायंसेज, हूवर, आयरन, ड्रायर, ड्राइंग रैक, ये हीटर हमारा पोर्टेबल, ये सब हमने यहाँ रखा हुआ है। और आप देखो हमारे सूटकेसेस भी इनफैक्ट यहाँ पड़े हुए हैं। उसके बाद भी काफी स्पेस है यार इधर। और इसके अलावा एक यहाँ पे हमेशा अपार्टमेंट्स में या घरों में बॉयलर रहता है, तो बॉयलर का एक डेडिकेटेड स्पेस रहता है। तो यहाँ से आपको दिखाती हूँ। जैसे यार ये है ना पीछे, दिस इज बॉयलर, क्योंकि यहाँ पे घरों में रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है, तो इसलिए हर टाइम पानी गर्म चाहिए। तो दिस इज बॉयलर हेयर, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देखो ये शेल्फ्स लगा रखी हैं हमने यहाँ पे, और भी स्टोरेज रखने के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी टूल किट्स हैं और यही सब, मतलब कील वगैरह, नेल्स एंड ऑल, बल्ब्स, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सब हमने यहाँ रखा हुआ है। और कुछ नहीं है यहाँ पे। नाउ वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू द मेन एरिया, लेट मी शो यू द वॉशरूम वेरी क्विक। तो यार एज आई सेड, इट्स अ 1 बेड 1 बाथरूम अपार्टमेंट। तो इट कम्स विद एन इनबिल्ट बाथ, एज यू कैन सी। इट इज अ नाइस साइजेबल वॉशरूम, मतलब और क्लीन है, मतलब कोई ऐसी दिक्कत है नहीं वॉशरूम में। एंड जो हमें फिक्सचर्स ये मिले थे ऑलरेडी अच्छे ही थे, तो हमने मतलब कुछ चेंज करा नहीं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमने बिडे इंस्टॉल करवाया था, बिकॉज आपको पता ही होगा वेस्टर्न घरों में बिडे नहीं मिलता है। तो वी इंस्टॉल दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये एज इट इज ही है जैसा हमें मिला था। Now coming to my favorite area of this house, which is our living cum kitchen area. तो सबसे पहले मैं आपको एक्चुअली किचन दिखा देती हूँ गाइस वेरी क्विकली। तो यार देखो किचन मैंने बहुत अच्छे से साफ कर रखी है आप लोगों को दिखाने के लिए, बहुत ज्यादा साफ कर रखी है। तो इससे पहले कि गंदी हो जाती तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना लें। तो गाइस ये था हमारा रैक, मैंने खरीदा इसको अमेजोन से, बहुत ही ज्यादा सही है। इसके ऊपर प्लेट्स आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है धो करके। ये है माइक्रोवेव हमारा छोटा सा। पीछे यार पूरा ना पार्क है, यू कांट सी इट राइट नाउ, बट मेरे पास अगर कोई दिन की फुटेज होगी तो मैं वो इसमें डालूंगी। तो इट्स वेरी नाइस। सुबह सुबह बहुत धूप आती है यार, अच्छे से मतलब वार्म रहती है किचन।
जितने भी डिशेस हैं वो मैंने यहाँ पे लगा रखी हैं, एज यू कैन सी। ये पूरा मेरा डिशेस वाला एरिया है। दिस इज द डिश वॉशर। अगेन ये इंस्टॉल्ड आता है किचन में। तो एंड ये है हमारा 4 रिंग का हॉब एंड दिस इज आवर ओवन। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर बहुत स्टोरेज है, ये भी स्टोरेज है। यहाँ हमारे स्पून्स कटलरी वगैरह रहता है। यहाँ पे यूटेंसिल्स रहते हैं एक्स्ट्रा, जो भी मुझे मतलब इंडियन वाले बर्तन कढ़ाई वगैरह यूज करनी हो। और ये है यार फ्रिज भी मैंने अच्छे से साफ कर रखा है। और यहाँ पे देखो पूरा सेक्शन ऐसे रहता है फ्रिज का। और नीचे फ्रोजन का सेक्शन रहता है। तो ऊपर रहेगा आपका फ्रिज और नीचे रहेगा जितना भी आपका फ्रोजन आइटम्स है आप वहां रख सकते हो। थोड़ा ये ऊपर नीचे होता है, इंडिया में फ्रोजन ऊपर होता है और फ्रिज नीचे होता है, बट यहाँ वाइस वर्सा है। तो ये यार किचन हमने बस यहाँ पे ये टेबल इंस्टॉल रखा है थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब वर्किंग स्पेस के लिए। और ये है भी थोड़ा क्योंकि हमारे मसाले बहुत होते हैं तो मेरे सारे मसाले मैं यहाँ सेट कर देती हूँ। और ये है वॉशिंग मशीन गाइस। ये थोड़ा वियर्ड होगा लेकिन आयरलैंड में या फिर कोई भी वेस्टर्न कंट्री में मतलब मोस्टली जो ये हमारी वॉशिंग ड्रायर होता है वो किचन में ही इंस्टॉल रहता है। तो उसकी प्रॉपर स्पेस किचन में ही होती है और इसका एक मतलब पूरा कनेक्शन टैप से मतलब नीचे से उन्होंने दे रखा होता है। तो यार बहुत कॉम्पैक्ट है लेकिन बहुत यूजफुल है। मतलब कि मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि किचन बहुत छोटी है या फिर किचन में मतलब क्योंकि इतने अच्छे से बनाई हुई है कि इट्स मैनेज्ड वेल। सो तो ये है हमारी किचन। एंड एक्चुअली किचन का और भी अच्छा पार्ट ये है हमारा फोकस लाइट्स जो हमने ऊपर लगा रखी है। तो इससे काफी ब्राइट रहती है किचन। नाउ कमिंग टू द माय मोस्ट फेवरेट पार्ट जो घर का है वो है हमारा लिविंग एरिया। तो देखो यार ये पूरा मतलब जब हम आए थे तब ऐसा नहीं था। वी लिटरली चेंज्ड एवरीथिंग हियर, इट वाज ऑल ब्लैंक, सब कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये काउच हमने लिया था, वी गॉट दिस फ्रॉम बार्गेन टाउन। काफी अच्छा मिल गया यार, बहुत ही कोजी है। बहुत आप लेट सकते हो आराम से, आप बैठ सकते हो, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है बैठने में लंबे टाइम के लिए। मैं तो पूरा दिन यहाँ बैठी रहती हूँ। ये टेबल कॉफी टेबल आई गॉट इट फ्रॉम वेफेयर, यूके की वेबसाइट है फर्नीचर की, मैंने वहां से ही ऑर्डर किया। एंड सेम फॉर दिस आर्मचेयर गाइस। फन फैक्ट, पूरा फर्नीचर जितना भी आपको यहाँ दिखेगा दिस इज ऑल हैंड असेंबल्ड। यहाँ पे कोई मतलब हैंडीमैन होते हैं बट वो एक फर्नीचर को असेंबल करने का 50-50 100 यूरोज देते हैं। तो हमने ये सारा फर्नीचर मैंने और शशांक ने बैठ करके असेंबल किया एंड तभी मेरे को बहुत ज्यादा प्यार भी है इस फर्नीचर से क्योंकि दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन विद आवर ओन हैंड्स। सबसे सुंदर चीज इस घर की वो है ये टीवी यूनिट। एज यू कैन सी कि ये टीवी यूनिट यार इसकी बहुत बढ़िया सी स्टोरी है। तो मुझे सिर्फ यही टीवी यूनिट चाहिए था, मैंने इंटरनेट पे देखा था और मैंने इसका प्राइस देखा, इट वाज अराउंड 270 यूरो समथिंग JYSK से। और यार मैं ना बहुत परेशान हो गई यार, मैं कैसे खरीदूंगी यार, ये कैसे खरीदूंगी, ये तो बहुत महंगा है, बजट से बाहर है। बट मुझे चाहिए ऐसा ही था मतलब रैटन का और मतलब ऐसे वुड फिनिश में। तो मैं JYSK गई डाइनिंग टेबल की चेयर्स खरीदने एंड यार मतलब इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। मैं वहां गई और मैंने देखा यार ये पीस पड़ा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है रिडक्शन। तो दिस वाज देयर डिस्प्ले पीस जो वो मतलब बेच रहे थे अराउंड 80 यूरोज या 100 यूरोज में मुझे मिल गया ये सेम पीस जो मुझे चाहिए था। तो गाइस मैनिफेस्टेशन वर्क्स। बट हाँ दिस इज माय फेवरेट पीस। और फिर हमने लिया टीवी। ये हमारा टीवी सैमसंग का है, बहुत बड़ा है और बहुत बढ़िया टीवी है, एकदम मस्त। पूरा दिन मैं इसके ऊपर नेटफ्लिक्स यूट्यूब एंजॉय करती रहती हूँ। और उसके बाद आता है हमारा छोटू सा डाइनिंग टेबल। छोटू भी तो नहीं है बट मतलब बढ़िया है एकदम, प्रॉपर साइज का है, राउंड टेबल। ये भी हमने JYSK से ही लिया और मैचिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपको लग रहा हो कि सब कुछ मैचिंग फर्नीचर लिया है तो ऐसा नहीं है। हमने जो भी फर्नीचर रिडक्शन में था हमने वो लिया था। और सेल में भी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की यही सेल पे थी वेफेयर की वेबसाइट पे। बट पता नहीं क्यों एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ एक जैसा हो गया कलर में। तो कोई भी आता तो वो यही बोलता आप लोगों ने मैचिंग लिया क्या सब कुछ। तो मैं बोलती हूँ नहीं यार मैचिंग तो नहीं लिया था। एंड लास्टली हमने इस वॉल को पेंट कराया इन कलर ग्रीन। आई लव दिस कलर, लव। अभी आपको इतना अच्छे से दिखेगा नहीं बट दिन में ये इतना सुंदर लगता है, इतना अर्दी कलर है ये। तो आप पूरा टोन देखोगे अगर घर का, इट्स ऑल वेरी अर्दी कि ये ग्रीन है, ये ब्राउन है, तो पूरा एक ऐसे मुझे लगता है कि देयर इज अ
whole गार्डन इनसाइड माय लिविंग रूम, और ये मेरा एक प्लांट जो और भी इस जगह को लाइफ देता है। दिस इज आवर क्यूट सी आईके से खरीदी हुई लैम्प। तो व्हेन शशांक हैज टू वर्क हियर ही कैन वर्क। मैं भी कभी कभी यहाँ पे काम करती हूँ, मेरे को ज्यादातर काउच पे काम करना पसंद है, बट दीज आर आवर, यहाँ पे फोकस लाइट है इसकी और ये नॉर्मल लैम्प। आई डोंट थिंक कि बाहर आपको दिखा पाऊंगी ज्यादा, बट दिस इज आवर क्यूट सी बालकनी। तो ये ऑलरेडी इसके साथ देखो हमें बाहर आउटडोर का ये हमें मिल रखा था, हमने खरीदा नहीं है खुद से। वी गॉट अ टेबल, वी गॉट चेयर्स, और ये मैंने पौधे वौधे लगा रखे हैं, और ये पूरा ग्रीन स्क्रीन है थोड़ा, क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लोर पे अपार्टमेंट है तो मुझे प्राइवेसी का थोड़ा इशू था, तो ये पूरा ही इट्स ऑल कवर्ड। और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट बालकनी का, जो मैंने बड़ी मेहनत से उगाए हैं, और वो है मेरे टमाटर। तो गाइज मैंने ऑलरेडी इसके 5-6 टमाटर खा लिए हैं, बट यार दुख देखो अभी भी इस पर टमाटर उग रहे हैं। तो मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, अभी तक आपको घर देख के पता चल गया होगा कि घर के कलर्स देख करके कि ब्राउन, ग्रीन, पूरा यहाँ पे जो लीफ के पैनल्स लगा रखे हैं। आई लव 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 प्लांट्स एंड दैट इज व्हाट माय हाउस रिप्रेजेंट्स, व्हिच इज लाइफ। एंड बस यार ये हमारा एक छोटा सा घर। नाउ लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ बाइंग अ हाउस इन आयरलैंड। इट इज नॉट एज easy as just going into a house for sale and just giving the money and buying it. It is not as easy as that. It's a little difficult process, it's a very tedious process, and it is a very long process, so you have to be very patient. In my case, I tried my level best to expedite the process, and even after then the process took nearly 6 months. So let me actually walk you through the whole process, how I bought this house. So the very first thing that I decided was, I decided a budget with my husband Shashank, that how much money are we planning to invest, and how much money of that will come from our own savings, the main chunk of deposit, and how much will come from the mortgage. So keeping all of those things in mind, we did not want a very high mortgage, and because we did not want to repay 2 lakhs or 3 lakhs in loan amount. So we decided to go for less mortgage, and we decided to put as much money as we could from our own end. That's what we decided. Whatever suits for you, you can go with that. But the main thing that you have to keep in mind is how much money are you looking to invest in a house. Now the second process is getting your mortgage or loan approved. Home loan in Ireland is called mortgage, so just to keep the terminology simple, I'll just use home loan going forward. So home loan here, first of all, it's a little difficult process. If your history with credit is very good, you don't need to worry. But if, for example, you are betting and you have a very lavish lifestyle, if you are sending money to your parents or your family or into anybody basically in Ireland or in India, you have to make sure that your accounts are all clear of that before 6 months of applying for the mortgage. That is a thumb rule. If you are planning to buy a house in the next 6 months, make sure that in these 6 months there is no transaction that they can raise a question on, because they ask for your bank statements, guys. And that is the first and the most important thing to get your loan approved. Secondly, if you are buying the house for the first time in Ireland, you can avail up to 90% of the house value from the bank. So they will give you 90% of the loan amount, and I did avail of that. Now there is a catch. 90% will only be 4x of your current salary. So it's not like 90% is the maximum that they'll give you. But again, it will depend on how much money you earn. So if your salary is, for example, 40,000 euros a year, you just multiply it by 4 times, and that is the maximum amount of loan that you can get. As I said, again, keep in mind the transactions that you do, because that will be taken into consideration to either increase the loan value or decrease the loan value. So if they see that you are able to survive by spending good money on renting and good money on your life, on your day-to-day utilities, they'll know that you can survive, so they will increase your loan value a little bit. Okay, so make sure that you keep your
history of your transactions. Really good. No betting, guys, not even online betting. Make sure you don't go to casinos because it just shows on the casino the ATM name as well. So don't go there. So make sure your accounts are clean. Next step. So after your loan is approved, they give you a loan in principle. So you get like a letter which makes sure that you can give that letter to the letting or the agency who's selling the house, so that they know that you are a legit buyer, because of course not anybody can go and just put a bidding on a house. So this is your loan now. Now coming to the actual part, which is selecting the house. So there are two main websites where you can look for the houses that are on sale. One is daft.ie and another one is myhome.ie. On both of these, you'll find houses that are listed for selling. Some major companies here that the agencies that sell the houses are Sherry Fitzgerald, Ray Cook. We have Owen Riley, and there are a few others, but these are the most important ones. If you're planning to buy a new build house, the price that is mentioned on the website or that I've mentioned is the final price. There is no a room for any kind of negotiation, or there is no room for bidding to increase the price of the house. That's the final price. But if you're going for an old house or a second-hand house like I did, the asking price on the website is not the final price. So don't get fooled. If you see a house of 250,000 euros on the website, it is more than likely that it will go above 280,000 euros. So always there is room for this buffer, and it all depends on how much bidding comes for the houses, because there is a bid system in Ireland. So if, for example, you like the house, you put the query to the letting or the selling agency. You give them their they'll ask you for your details, like your residence permit and your principal, as I said, loan in principle approval. All of that, once that is approved, you'll be put on a bidding system where you will put bids for the house. So for example, the asking price is 250,000 euros. You put to 55,000 euros. There'll be a few other people who will be going like 260,000, 265,000, 275,000, unless people move out of the bidding process. And after the bidding process, if you win, like if yours is the last bid and that's accepted, that is when the sale will be closed. The sale will not be closed. You go sale agreed. When you go sale agreed, you have to give some token value, or like the token money. In my case, I gave around 5,000 euros. It's pretty standard to give 1% or something of the house. Once you have gone sale agreed, now comes the whole process of surveying, conveyancing, the bank approving the property, all of that. There are like 10 different things involved. And after it's, as I said, it's literally 6 to 7 months of the process. Going sale agreed is not the biggest challenge. Going sale agreed to sale closed is the biggest challenge in terms of an old build house. So this process alone takes around 6 months or even more in some cases. I was the one who kept pushing my solicitors and the buyers, and the sellers' solicitors to expedite the process. But in many cases, it can go up to 8 to 12 months as well. That's pretty standard here. So after the whole process is done, the mortgage funds are released into the seller's account. That is where your house goes sale closed, and then you get the keys of the house. Before moving further, I want to just let you know about a first-time buyer scheme. So what is a first-time buyer scheme? So if you're planning to buy a house in Ireland and it's a new house, it's newly built, it is not second-hand home, the government supports you by giving your tax money back, the money that you've paid in tax, at max around 30,000 euros. So if you have paid 30,000 euros in tax combined with your partner, or if you're going solo, so you must have paid that much amount. If you have paid 16,000 euros in taxes, you will get 16,000 euros back. But it totally depends on how much money you've paid in taxes. To a maximum of 30,000, you get as like
a deposit amount for your own home. So you only have to pay around 10% from your own pocket, but up to 30,000 comes from the government, from your own tax money that you have given. As I said, it's a second-hand house for me. I did not avail this benefit because it's only applicable for newly built houses. Then come the cost of a structural survey. So this is something that is the bank requirement before they disperse the loan. You have to have the structural survey done so that they know that the property is in good condition. And we have to, do this. It's not the bank who has to, pay for it. It's we paid 500 euros. That's pretty standard here for a property of 1 bedroom. So you can expect to pay that much. And then there is another property valuation survey that, that is done from the bank. That's nothing that we do there. And then comes the cost of the stamp duty, of course, which is around 1% of the property value. So excluding that. So keep that in mind. So these are all the expenses that you can keep in mind when budgeting for a property. Always keep that in mind that there will be bidding. So the price will go up in the second-hand home scenario, and then there will be all these additional costs. And lastly, and the last most important thing is, if you like a property and you think that currently you are falling short of 10,000 euros or 20,000 euros, keep in mind this very, very important tip, guys. This is what I've learned through the process. As I said, you get around 8 to 12 months to get the house. So when you start the process, you only give token money, but the whole money is sent after you go sale agreed, when you go sale agreed basically. So you get all those 8 to 12 months more to arrange for more funds. So don't worry if you think that the house is not falling under your budget now. Just go for it. Don't go, of course, 50,000 euros or 60,000 euros more. Just if you are lagging behind by 10,000 or 20,000 euros, just keep in mind that you will get the time to arrange for those funds. So that's one very important thing that I learned from the whole process, because I got really, really worried that I will not be able to arrange that much money, but I got so much time that I was able to. Now, coming to the last part of this video, which is the pricing of this particular house, so that you can get an overview of how the prices are in Ireland. So this house was listed for around 200,000 euros. But I was very naive. I thought 200,000 euros is the amount that I have to pay, but I did not know there was any bidding system or such. So the final price after the bidding was from 200,000 to actually 250,000. But I was adamant on buying this house because I loved it when I saw it. And that is why I just increased the buffer and I was like, okay, I'm just going to go for it. And that is what I did. So it was 250,000 euros for this house. Apart from that, there were additional costs, guys. So you'll always have to keep in mind that house, like the deposit and everything, is not just a cost. You also have to pay for the stamp duty. You also have to pay for the solicitor's cost. You also have to pay for the conveyancing, and you also have to pay for your life insurance, and if you additionally take any home insurance as well. So all these things you have to keep in mind. So I already told you about the house cost. Now coming to the solicitor's cost, my solicitors were pretty good, and they took 1,300 euros plus VAT. Guys, if you want a good solicitor who does not take a lot of money for the whole buying process, do let me know in comments, and I'll send you the details of the solicitors who did the job for us. It was really good. And just to end the video on a personal opinion note, I want to share a tip with you. The reason why we went for an old house was, there were multiple reasons. Okay, the very first reason was that the new homes, although they are in good quality, they are usually in far away places. They are like far from Dublin. And I really did not want to invest so much money outside of Dublin, because I know that the property prices will increase so much in Dublin, and the rent that you get also, if you are planning to rent your house, you'll get a lot of rent compared to any other place. Secondly, and like this was the biggest reason as well, the new property prices, since the government pays 30,000 euros, maximum of 30,000 euros in deposit, due to that, the property prices are very, 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 very inflated. So the actual property price might only be just 330,000,
but they make sure that the property is listed at around 450,000 or 500,000 euros, which I think is not justifiable, because if you try and buy any second house home in all these faraway places, or these places, these are like 10-20 kilometers away from Dublin, you'll see that they are not more than 300,000 euros, 330,000 euros. And I'm talking about a house, like a landed house, not apartment. So keeping all of those things in mind, we decided that we want to live in Dublin and we do not want to pay any inflated price for a property just because of the lalach that the government gave of 30,000 euros, because I knew that at the end of it wouldn't be worth for me. If you're planning to live in Ireland for the rest of your lives and you know that you want a house, of course go for a new build one which is far away, because in that sense it won't matter, because it is a place that you're going to live forever. For me, it was more of a living plus investment scenario. So that is why I wanted to invest here in Dublin, and I did not care about a new build or an old build. So yes guys, that is all about the buying process and everything. Hope you found this video informative, and if you have any comments, or if you have any questions, and if you are trying to get into this buying process in Ireland, please leave a comment, and I'll try my best to help you guys. Thank you so much.